is basically definition of मैग्निफिकेशन, क्योंकि ये बार बार पूरे चैप्टर में आएगा। ठीक है। और लाइट एनर्जी इज बेस्ट यूटिलाइज्ड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप. These instruments make it possible to see distant object or smaller object, minute objects which cannot be seen by naked eye. So we are going to study how does these instruments, that is microscope and telescope, work in order to make things visible which are otherwise not visible to our naked eye. फर्स्ट वो थिंग इज, यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत किया हुआ है पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई. आई के पास आई लेंसेज की वजह से और आई लेंसेज के मॉडिफाइबल होने की वजह से, दैट मीन्स द आई लेंसेज कैन इजीली बी मॉडिफाइड. ठीक है, इजीली बी मॉडिफाइड नेचुरली, बायोलॉजिकली इट कैन बी मॉडिफाइड. सिलियरी मसल से उसको कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड किया जा सकता है, अकॉर्डिंगली उसकी फोकस करने की एबिलिटी को चेंज किया जा सकता है. ठीक है, फोकस करने की एबिलिटी मतलब उसका फोकल लेंथ चेंज किया जा सकता है. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बोलते चलना. हाँ यस सर। सर। एक बार रिपीट करोगे? हाँ बिल्कुल रिपीट करूंगा, बट उसके लिए मैं पूछते रहूंगा तो फिर टाइम बर्बाद होता रहेगा. आप लोग को हाँ खुद थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना होगा पूछने का. देखो हमारे हाँ आईज का जो मसल है सिलियरी मसल, इस तरीके से इसको पुश करता रहता है या प्रेशर लगाता रहता है, जिसकी वजह से ये लेंस जो है इट मे बिकम मोर थिकर एंड थिनर एज पर द पुश. ठीक है, जब ये थिक हो जाता है फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है, फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है. और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है. इज दैट ओके? यस सर। That means power of the lens, the eye lens can change. Our eye is a natural lens. Fixed in its place through muscles. This lens has power to change its focal length. ठीक है? The lens, our eye lens, has ability to change its focal length. ठीक है, this ability is called power of accommodation, and it is because of this that we can clearly see nearby as well as distant objects. When we see a distant object, the parallel rays of light falling on our eye are focused by the lens on the retina. Therefore, the object is seen distinctly. A normal eye can see distinctly. A normal eye can see distinctly an object at infinity, which is called far point of a normal eye. Far point of a normal eye is infinity, क्योंकि infinity तक के ऑब्जेक्ट को वो देख सकता है. In this case, the eye is in relaxed state, that there is no tension in muscle, and the focal length of the lens is maximum. So maximum focal length कब होगा? जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होगा. जैसा मैंने शुरू में बताया, ये जितना एक्सपैंडेड थिनर रहेगा उसका फोकल लेंथ उतना ज्यादा होगा, इंक्रीज करता है फोकल लेंथ. और जब बड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाएगा, बीच में थिकर हो जाएगा, तो इट्स फोकल लेंथ डिक्रीजेस. राइट? ओके. Can see distinctly an object at infinity, which is called far point of the normal. In case the eye is in relaxed state, there is no tension in muscle and the focal length of the lens is maximum.
When, however, we see a nearby object, the muscles contract to increase the curvature of the lens and focal length of the lens decreases. And again, a clear image of object is formed at retina. This power of this ability or this power of changing the focal length of the eye is called power of accommodation. Can we note this down? Only this point, power of accommodation, the ability the ability of eye to change focal length of the eye lens is referred as power of accommodation. Is that okay? बात समझ में आ रही है? Can I rub it? यस सर, नोट कर लिया। As we see more and more nearby objects, more and more power of accommodation is to be applied. But there is limit of applying the power of accommodation. The nearest distance d up to which I can see clearly by applying maximum power of accommodation is called least distance of distinct vision. And for human being, distance of least distance of distinct vision is how much? 25 centimeter. Is that okay? The point at a distance d from eye is called near point of the eye. If an object is placed at a distance less than 25 centimeter from the eye, it will not be seen distinctly. Is that okay? यस सर। Visual angle. Visual angle का मतलब क्या है? कोई भी चीज हम लोग देखते हैं, ठीक है, वो हमारे आई के ऊपर एक एंगल बनाए. The angle which an object sustained at our eye is called visual angle. ठीक है, आप मुझे देख रहे हो या फिर अपने फोन को या फिर अपने लैपटॉप को देख रहे हो. सपोज ये लैपटॉप का स्क्रीन है, ये लैपटॉप का स्क्रीन आपके आईज के ऊपर एक एंगल बनाए. इज दैट ओके? दिस एंगल इज कॉल्ड एज विजुअल एंगल. This angle may be two-dimensional for two-dimensional object, three-dimensional for three-dimensional object. Is that okay? Okay. यस सर। Next thing is the apparent size of object as seen by our eye depends upon the visual angle. Larger the visual angle, bigger the apparent size of the object. Angle अगर बड़ा होगा तो apparent size of the object will appear larger. For example, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम साइज के हैं, बट दे आर प्लेस्ड एट टू डिफरेंट पोजीशन. और हम आंख से देखने की कोशिश कर रहे हैं इनको. इसका एंगल जो होगा, चूंकि ये क्लोजर है आई के, it is going to sustain a larger angle than the one which is placed farther. फार्दर वाले का सेम साइज है बट एंगल छोटा हो गया. The angle it is making at the eye, and therefore
the farther object is going to appear smaller to us. Nearer object will appear larger to us. Are we getting this point? दो 1 लीटर का बॉटल एक एकदम पास में रख लीजिए और दूसरे को 2 मीटर 3 मीटर की दूरी पर अपने पास से रखिए. Now try to see them. You will see that the one which is closer to us will appear larger, and the one which is placed 2 meter, 3 meter, or 5 meter apart, or 5 meter far from our eye, is going to appear small. Is that okay? Okay, sir. Okay. In figure 1, the object AB. So basically यहाँ इस पैराग्राफ में exactly वही चीज समझाया हुआ है कि AB का साइज A1 B1 का साइज is same, but because of their distance from the eye, they are subtending different angle. A1 B1 subtends larger angle, so it would appear larger compared to AB, which is quite farther from the eye. Is that okay? Yes, sir. Hmm. Uh, in figure 1, the object AB sustains a visual angle alpha at the eye and its image CD is formed on retina. CD is formed on retina. When the same object is brought nearer the eye in position A1, B1, it sustains a larger visual angle beta at the eye and a bigger image CD1 is formed on the retina. Obviously, the same object appears bigger to the eye. Thus, in order to see an object bigger, the visual angle should be increased. So what should be done? If we want to see an object larger, what should we do? We have to increase the visual angle.
Telescope and microscope are aids to increase the apparent size of object by increasing visual angle. So what does microscope and telescope do? They perform the action of magnification. How do they do that? By increasing the visual angle. Is that okay? Microscope and telescope magnify images by increasing their visual let us go to the next page. Very distant objects such as moon, although very big in size, appear very small because they sustain very small visual angle at height. To see them bigger, we cannot decrease their distance, but with the help of proper lenses, a small image of distant object can be formed close to the eye. Then this image will sustain a large visual angle at eye and the object will appear big. Telescope is based exactly on this principle. Is that okay? Very small objects sustain a small visual angle due to their smallness. We can increase the visual angle by bringing these objects closer to the eye, but we cannot do so beyond a certain limit because then the object will not be seen distinct. If with the help of proper lens, a large image of small object is formed, then this image will sustain a large visual angle at the eye and object will appear big. Microscope is based on this principle. So ये दोनों ही जो है, they are based on the principle to increase the visual angle. Is that okay? Now next is magnifying power का definition जो हम लोगों ने पहले define किया है. Magnifying power क्या है? The purpose of microscope and telescope is to increase the visual angle. Therefore, the power of these instruments is measured by their power of increasing visual angle. This is called magnifying power of the instrument. The magnifying power of an optical instrument is defined as ratio of visual angle subtended by the image formed by instrument at the eye to the visual angle subtended by the object at the unaided eye. Can we take this down, the definition? तो एक वैल्यू वो था जो मैंने लिखवाया, क्या था? साइज ऑफ द इमेज बाई साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या है? विजुअल एंगल. तो ऑब्जेक्ट को देखने के टाइम सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के टाइम पर द विजुअल एंगल इज, ये मान लो थीटा ऑब्जेक्ट है और ये मान लो बड़ा सा इमेज बन रहा है, और इस केस में ये एंगल हो जाता है थीटा इमेज. ठीक है? तो थीटा इमेज बाय थीटा ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर. इज दैट ओके? Yes, sir.
Next thing is simple microscope. सिंपल माइक्रोस्कोप में होता क्या है? एक सिंपल सा लेंस रहता है कॉल्ड आईपीस. The microscope is an optical instrument which forms large image of a close and minute object. This image sustains a large visual angle at the eye so that the object looks larger. In the simplest form, simple microscope or magnifying glass is just a thin, short, focus, convex lens carrying handle. The object to be seen is placed between the lens and its focus. ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं? The object is placed between the lens and its focus. क्यों यहाँ पर फोकस और लेंस के बीच में प्लेस करते हैं? So that the magnified image of the object can be formed, and this image is going to be virtual in nature. Is placed just behind the lens. Then the eye sees a magnified, erect, and virtual image on the same side as object. The position of the object between the lens and its focus is so adjusted. हेलो स्वरा. हाँ सर. हाँ, 10 मिनट वेट करो, मैं बताता हूँ कॉल कर. हाँ ठीक है. Eye sees a magnified, erect, and virtual image on the same side of the object. The position of the object between the lens and its focus is so adjusted that image is formed at the least distance of distinct vision from eye. The image is then seen most distinctly. The image is seen most distinctly, और जितना मैग्निफाइड होगा उसके हिसाब से हमारा विजन एंगल होगा. और in figure 2.8 2a, AB is a small object placed between a lens L and its first focus f dash. Its magnified virtual image A dash B dash is formed at distance d from the lens. Since the eye is just behind the lens, the distance of image A dash B dash from the eye is also d. Okay. In figure, okay. हेलो, कितने देर में? हाँ, 10. ओके. ओके, ठीक. ओके. और मैग्नीफाइंग पावर, beta angle subtended by image A dash B dash at the eye, and alpha angle subtended by object
AB at the eye when placed directly at the distance D from the eye. Then the magnifying power of the simple microscope is angle subtended by the image at eye by angle subtended by the object at eye when placed at least distance of distinct. Since the object AB is small, the angle alpha and beta are also small. Then from figure 2A and 2B, 2A से क्या रहेगा? ये एंगल और ये वर्टिकल हाइट जो है AB अपॉन OA या AB अपॉन D इज tan अल्फा नीचे वाले के लिए और ऊपर वाले के लिए AB अपॉन OA. AB is this length upon OA is this length. ठीक है? That's beta. Now magnification is image कौन सा है? Image is this one. ये बीटा वाला image angle है. Is that okay? Beta which is tan beta. Beta which is tan beta is AB by OA divided by AB upon D. AB numerator वाले cancel हो जाएंगे. This will become D by OA. But OA is U. That is object distance and D is distance of least distance of distinct vision 25 centimeter. So magnification will become equal to D upon U. Is that okay? ये वाली चीज नोट कर लेंगे हम लोग. Magnification because of simple microscope और magnifying glass क्या होगा? M is equal to D by U. Magnification of simple microscope or magnifying glass. Lens formula 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. V क्या है? Image formation का distance. Image कहाँ form करा रहे हैं हम? At the least distance of distinct vision. So V की value क्या हो जाएगी? It will be minus D. It is on the same side of the object. जिधर से रे आ रहा है sorry it will be plus. U and D both will be plus. या फिर दोनों माइनस हो. ठीक है? V और U दोनों माइनस होंगे या फिर दोनों प्लस होंगे. ठीक है? जनरली दोनों माइनस होंगे. ये लेंस है. इसके इस साइड में ऑब्जेक्ट है और इसी साइड में इमेज भी फॉर्म हो रहा है. तो दोनों माइनस 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 U एंड माइनस. तो माइनस D माइनस ऑफ 1 by minus U is equal to 1 by F. इससे हमारा रिलेशनशिप जो आता है D by U is equal to 1 plus D by F, where F is the F is the focal length of the convex lens. ठीक है? So finally हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया? It becomes magnifying power is equal to 1 plus D upon F. अब इसमें क्या है? D distance of least distance of distinct vision. F focal length of the lens. So the only variable is focal length of the lens. ठीक है? ऊपर वाले में भी एक ही वेरिएबल था. That was U. ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है हम? ठीक है? ऑब्जेक्ट जहां पर रखेंगे वो वाले डिस्टेंस से हमको डिवाइड करना था.
ऑब्जेक्ट बढ़ाते या घटाते रहेंगे, दूर रखेंगे पास रखेंगे, उसके हिसाब से ये आ जाएगा। बट ये चीज मॉडिफाई होकर के इट बिकेम डी बाई एफ, मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या रहेगा उससे काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट हो गया हमारा मैग्नीफाइंग पावर। आर वी गेटिंग? मैग्नीफाइंग लेंस या सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर जो है दैट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजीशन। पहले वाले इक्वेशन से इट इज डिपेंडेंट ऑन ऑब्जेक्ट पोजीशन, बट रियलिटी में फाइनल एक्सप्रेशन के बेसिस पर क्या आ गया हमारा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन। जहां रखना है रख लीजिए, वो 1 + d/f का मैग्निफिकेशन मिलेगा। इज दैट ओके? We shall substitute only the numerical value of d and f, thus magnification is positive, which means that an erect image is formed. It is also clear that shorter the focal length of the lens, larger is the magnifying power. जितना ज्यादा shorter होगा focal length, उतना ज्यादा magnifying power होगा. If eye is kept at a distance d from lens, b will be equal to minus d minus d, d minus d. लेंस यहां पर है और यहां से आई को अगर मैं इस d डिस्टेंस पर रखता हूं तो v मेरा क्या हो जाएगा, v मतलब image distance, it will become d minus d and the magnifying power will become m is equal to 1 plus d minus d. So let us go to the previous diagrams. आई से इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल डी। ठीक है, अभी यहां पर क्या बोला गया है, if I is kept at a distance d from the lens, I is at distance d from the lens, मतलब ये वाला डिस्टेंस अगर स्मॉल d है तो लेंस से इमेज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d माइनस डी। इज दैट ओके? आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. And therefore यहां पर ऑब्जेक्ट लेंथ, सॉरी इमेज लेंथ को जो हम कैपिटल डी ले रहे थे, दैट इज डिस्टेंस ऑफ लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन का पोजीशन ले रहे थे, उसके बदले में हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, डी माइनस डी विथ माइनस साइन, क्योंकि लेंस से हमारे इमेज का डिस्टेंस क्या है, दैट इज डी माइनस डी। आई से इमेज का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल डी, इसलिए लेंस से इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, डी माइनस डी। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? में है कर्तव्य। यस सर। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। सर मेरा 5:30 को एक मैं ट्यूशन ऐसे ही है करता दूसरा। हूँ। हाँ ठीक है, 5:30 को मैं छोड़ दूंगा। ओके। ओके हाँ, समझ गया सर। ठीक है, तो डी को डी माइनस यू से, डी माइनस स्मॉल डी से हमने रिप्लेस किया है, तो इस कैपिटल डी को डी माइनस स्मॉल डी से रिप्लेस कर दिया एंड दैट बिकम्स द फाइनल मैग्नीफाइंग पावर, assuming or introducing all the possible changes. Thus, magnifying power is reduced. Hence, to obtain maximum magnifying power, the eye must be very close to the lens. जितना ज्यादा पास रह सकता है आई,
लेंस के उतना पास रखना होता है। टू सी विथ रिलैक्स्ड आई द इमेज ए डैश बी डैश शुड बी फॉर्म at infinity. In this case, the object AB will be at the focus of the lens. The object AB will be at the focus of the lens. And U will be F. U मतलब object distance will be equal to F. To see with relaxed eye, the image A dash B dash should be formed at infinity. And in this case, the object will be, देखो इमेज को अगर इंफिनिटी पे फॉर्म होना है मैक्सिमम फॉर्मेशन के लिए, मैक्सिमम साइज के लिए, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रखते हैं तो इमेज हमारा इंफिनिटी पे फॉर्म होता है, राइट? ऐसा हमने सुना था लेंसेज के लिए। या इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो हमारा इमेज कहाँ फॉर्म होगा? फोकस पर। वाइस वर्सा, फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा? इंफिनिटी पर। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। होता था ना लेंस के फोकस पर या मिरर के फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो Yes, इमेज sir. इंफिनिटी पे बनता है, और इंफिनिटी Yes. पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस पर। याद है? खत्म हो गया मेमोरी? Yes, sir. ठीक है। अच्छा सुनो, अभी अब हम लोग यहीं पे रुकते हैं, दूसरा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, तो विल स्टॉप हियर। Okay.